A very good evening, everyone present. My name is Rajendra Singh Bisht, and I welcome everyone to this YouTube Live. The agenda for today's session is to talk about the important news compilation of today, which is 11th of June. So give me a quick confirmation if my voice is audible to all of you. Is the voice reaching you guys properly? Good evening, everyone. All right. So today is Saturday evening. Do you have a weekly quiz coming up after this one? Chaliye, so let us begin our session by the usual, in the usual manner, in usual pattern. So first of all, we'll talk about 11th June in history, and then we will talk about 11th June in present. So we'll start with what happened on this day in past. So one of the important happenings of 11th June was that in 1770, on this particular date, uh, the British explorer Captain James Cook, who you see on your screens, Captain James Cook, he discovered the Great Barrier Reef in Australia. Cook was an explorer, a navigator, and a cartographer. He is credited with providing us the most accurate map and description of Pacific. And it was in 1770, while he was moving through that area, his ship got stuck, and this is how accidentally the Great Barrier Reef were discovered. Right. All right. So the Great Barrier Reef, as most of you know, are the largest coral reef systems in the world. And as you can see in the image, these are the reefs systems situated off the coast of Australia near Queensland. This region is Great Barrier Reef. All right. So this is situated slightly off the coast of Queensland in Australia. And these are very huge structures. If I talk about the area covered by Great Barrier Reef, so that's approximately 3 lakh square kilometer, which is roughly 10% of the area of entire India, right? And these structures are so big, so massive that these are also visible from space. Great Barrier Reefs are also visible from space. And you also know that Great Barrier Reef is a UNESCO World Heritage Site since 1981. It is also a UNESCO World Heritage Site. Right? Very beautiful and very rich in terms of biodiversity. But of late, Great Barrier Reef is facing an existential threat. And that is the instance of coral bleaching. Coral bleaching are the instances of Great Barrier Reef losing their color because the corals are dying. And this is happening primarily because of the rise in ocean temperature thanks to global warming. Correct. So that's Great Barrier Reef and its discovery in 1770 by Captain James Cook. All right.
Another important thing that has happened today is that on this particular day, on 11th of June 1967, on 11th June 1967, the Six-Day War between which two countries finally came to an end. So Six-Day War between two countries in 1967 on 11th of June finally came to an end. Which set of countries are we talking about here? Please answer in the comment box. And incidentally, 11th June also happens to be 11th June also happens to be the date in 2009 when WHO declared swine flu as a global pandemic. Right? And this is football season. So let me also tell you that 11th June 2010 was when FIFA World Cup was opened in South Africa. So this was FIFA World Cup in South Africa 2010. This was the first FIFA World Cup in the African continent. Right. So it was between Israel and Palestine. We are talking about Six-Day War between Israel and Palestine. And we are also talking about swine flu. Swine flu was which variant, which version of a virus used to cause swine flu? उसका भी नाम लिखकर बताइए. और साथ में आप मुझे ये भी बताएंगे कि इस साल का फीफा वर्ल्ड कप तो कतर में होने वाला है. ऑल ऑफ अस नो दैट. We are waiting for FIFA World Cup in November this year in Qatar, which is 2022. Which is the venue of FIFA World Cup 2026? So ये तीनों questions के आप आंसर करेंगे कमेंट में. And this was what happened in the past on 11th of June. Let me repeat it once again. 11th June 1770. So 11th June 1770 was discovery of Great Barrier Reef. 11th June 2009 was WHO declaring swine flu as the global pandemic, जिसके strain का नाम अभी आप बताओगे. And 2010 was opening of FIFA World Cup in South Africa. Ayush, is this H1N1 or is it H2N1? Correct. And I think about you guys are correct about the FIFA World Cup 2026 because it will be organized by North America. It will be organized by North America, that is US, Mexico, and Canada. ठीक है. So this is about 11th June. 11th June happens to be the birth anniversary of a revolutionary freedom fighter of India, Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil was born on 11th June 1897 and he was finally hanged on 19th December 1927. All right. क्या आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है? Have you heard the name Ram Prasad Bismil? So for CLAT 2022 students, this lecture is completely optional. They are not really required to attend the lecture. They can focus on their exam some days from now. This lecture is primarily for CLAT 2023 students. राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने नहीं सुना है? तो फिर तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. राम प्रसाद बिस्मिल was one of the founders of, देखिए एक बात तो मैंने इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता दी है, that he was a revolutionary freedom fighters. और जो revolutionaries होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, revolutionaries are that band of freedom fighters which believed in the idea of using violence to achieve freedom for India. So they were in favor of using violent methods to get Britishers out of India. So in that sense, they had an ideological difference with Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi was a staunch believer in non-violence, while revolutionaries like Bismil, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Ashfaqullah Khan, they were revolutionaries. Okay, number one. Number two, Ram Prasad Bismil was
one of the founders of this organization called as Hindustan Republican Association, HRA. Hindustan Republican Association was an organization which was set up in 1921 in Lahore. And this was also the organization to which Bhagat Singh also belonged. Bhagat Singh was also a member of Hindustan Republican Association. So Bhagat Singh was a member while Ram Prasad Bismil was one of the founders. Ram Prasad Bismil was the one who wrote the constitution of this organization, Hindustan Republican Association. He was involved in a lot of revolutionary activities, and in one such activities he was proven guilty and he was hanged in 1927 in Gorakhpur jail. And the incidents because of which Ram Prasad Bismil was hanged was called as Kakori conspiracy case. Kakori conspiracy case. Okay. Have you heard about something called as Kakori train robbery? Kakori train robbery was August 1925. The members of Hindustan Republican Association, they looted a train. They robbed a train carrying the money of British Treasury near Lucknow. और काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में तो शायद आप में से जिसने भी रंग दे बसंती मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि रंग दे बसंती मूवी में भी इस काकोरी ट्रेन रॉबरी का एक रेफरेंस है. करेक्ट. ऑलराइट. और इससे रिलेटेड मुझे एक इंसिडेंस और भी याद आ रहा है कि ये जो काकोरी ट्रेन रॉबरी है इसको हिंदी में बोला जाता था काकोरी कांड. इन हिंदी इट यूज टू बी कॉल्ड एज काकोरी कांड. ठीक है. एंड लास्ट ईयर यूपी गवर्नमेंट ने इस नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया है बिकॉज अकॉर्डिंग इन हिंदी कांड इज अ वर्ड बेसिकली विच कैरीज सम काइंड ऑफ नेगेटिव कॉनोटेशन. उसकी थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है इसलिए उन्होंने इसको अभी काकोरी कांड बोलना बंद कर दिया. नाउ इट इज कॉल्ड एज काकोरी की घटना और काकोरी इंसिडेंट्स, नॉट काकोरी कॉन्स्पिरेसी. दैट्स राइट. ठीक है. और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक चीज मैं आपको और बताता हुआ चलता हूं बिकॉज आई थिंक वो चीज आपने जरूर सुनी होगी. द वेरी फेमस रिवोल्यूशनरी सॉन्ग दैट यू जनरली एट्रीब्यूट टू भगत सिंह. सो भगत सिंह के बारे में आपको पता है कि जब भी भगत सिंह का नाम आता है तो एक सॉन्ग उनके साथ एसोसिएट होता है जिसको बोलते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. ये सॉन्ग आई एम श्योर आपने बहुत सारी मूवीज में भी सुना होगा. सो मेरा रंग दे बसंती चोला जो है वो सॉन्ग एक्चुअली राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा है व्हेन ही वाज लॉज्ड इन लखनऊ जेल. और इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो एक बहुत फेमस पोएट भी थे. बिस्मिल उनका पेन नेम हुआ करता था और राम प्रसाद बिस्मिल ने ही वो बहुत ही फेमस गजल लिखी है जिसके बारे में भी शायद आपकी उसकी चंद लाइनें आपने सुनी होंगी. जो गजल कुछ ऐसे शुरू होती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में. सो राम प्रसाद बिस्मिल was not only a revolutionary freedom fighter but he was also a poet, right? तो आज उनकी जन्म दिवस है और he was born in 1897 and he was hanged in 1927. He was born in 1897, hanged in 1927. ठीक है. So this is about 11th of June in history. Now let us look at what happened on this particular day in present, which means let us look at some of the highlights from today's newspapers. सबसे पहली एंड फ्रंटलाइन न्यूज जो आज के न्यूज़पेपर में थी वो थी राज्यसभा इलेक्शंस बीइंग कंडक्टेड इन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. 2022 में राज्यसभा की 54 सीट्स के लिए इलेक्शंस होने हैं इन टोटल, आउट ऑफ विच 16 सीट्स वेंट फॉर पोल्स येस्टरडे इन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के 4 स्टेट्स में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए कल चुनाव थे और चुनाव के बाद इनमें से 2 स्टेट्स के नतीजे रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कौन से 4 स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो द 4 स्टेट दैट वी आर रेफरिंग टू हियर आर महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका एंड हरियाणा.
और ब्रैकेट में जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स दैट वेंट टू इलेक्शंस इन दिस फेज। अभी आप सबको ये पता है कि राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा हैज अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो इट्स अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन केस ऑफ राज्यसभा, which means common public does not go to vote. Common public does not go and vote in this election. In this election, MLAs vote and elect the state's representative in the parliament. So that's the system of Rajya Sabha election. We will talk about Rajya Sabha election process in detail in one of our future lectures. For the time being, remember the fact that in the election held yesterday, कल जो इलेक्शन हुआ था उसमें राजस्थान की 4 सीटों के नतीजे आ गए हैं और कर्नाटका की भी 4 सीटों के नतीजे आ गए हैं। ठीक है, बाकी दोनों स्टेट्स में रिजल्ट्स अभी होल्ड पर है। उसका रीजन ये है कि बाकी दोनों स्टेट्स में, महाराष्ट्र और हरियाणा के केस में, आफ्टर द इंस्टांसेस ऑफ कंप्लेंट्स एंड काउंटर कंप्लेंट्स, द वोट काउंटिंग वाज हॉल्टेड। इलेक्शन कमीशन ने वोट की काउंटिंग कल रात को शुरू नहीं की, तो महाराष्ट्र और हरियाणा के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, बट राजस्थान और कर्नाटका के जो रिजल्ट्स आए हैं, सो इन राजस्थान आउट ऑफ 4 सीट्स कांग्रेस वन 3, बीजेपी वन 1, करेक्ट। एंड कर्नाटका में इसका एग्जैक्ट रिवर्स हुआ है। कर्नाटका के केस में बीजेपी वन 3, कांग्रेस वन 1, राइट। हरियाणा के केस में भी आई थिंक आज रिजल्ट आ गया है। सो वन इज वन बाय कांग्रेस, अनदर इज वन बाय एन इंडिपेंडेंट। इन महाराष्ट्र के केस में बीजेपी इज श्योर टू वन एटलीस्ट 2 of these 3 seats, but the result is still pending. ठीक है, सो दिस इज अबाउट राज्यसभा इलेक्शंस येस्टरडे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ, हालांकि उसकी डिटेल हम बाद में चेक करेंगे, बट दैट वन थिंग इज, election yesterday was highlighted. One of the highlights of elections yesterday was cross voting and horse trading in these elections. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में एटलीस्ट 1 बीजेपी एमएलए voted in favor of Congress. Similarly, in Karnataka, at least 2 MLAs of Janata Dal Secular, one voted in favor of Congress, another voted in favor of BJP. So इसको हम बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। ये क्रॉस वोटिंग क्या होती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द पावर्स अवेलेबल विद इलेक्शन कमीशन एंड स्पीकर ऑफ द हाउस और द चेयर ऑफ द हाउस, उनके पास क्या पावर्स अवेलेबल हैं, इनकी बात हम आगे के एक लेक्चर में डिटेल में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, लेट मी जस्ट add here that the current elections or these elections to 16 Rajya Sabha seats are not really going to matter politically, because BJP already has a comfortable majority in Rajya Sabha. So BJP is already approximately 95 seats in Rajya Sabha in comparison to Congress parties nearly 30. तो इसका मतलब अगर 1-2 सीट्स आगे पीछे हो भी गई इन रीसेंट इलेक्शंस में, तो उसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन नहीं आने वाला है। सो आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आयुष का क्वेश्चन है कि ब्रिक्स कब स्टार्ट हुआ था। सो ब्रिक वाज एस्टेब्लिश इन 2001। आंसर विल बी, अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स कब स्टार्ट हुआ था, तो इट विल बी 2001। ठीक है, सो आयुष, आई होप दिस इज क्लियर, एंड everyone else, I hope we are clear about the first point of information, first news item of the day, which is Rajya Sabha elections. All right, so the second big highlight of the day was protests by the members of Muslim community, especially after the namaz, especially after Jummah's namaz. जुम्मे की नमाज के बाद कल फ्राइडे को इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में देयर वर प्रोटेस्ट्स। ठीक है, इन प्रोटेस्ट का रीजन और बैकग्राउंड आई होप आपको पता होगा। सो दिस इज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट remarks made by some of the BJP leaders
against some of the BJP leaders made some unsavory remarks over Prophet Hazrat Muhammad, and Muslims across the country, they are protesting against that, right? These protests were mostly peaceful in and around Delhi. दिल्ली के आसपास ये प्रोटेस्ट मोस्टली पीसफुल थे. यूपी के भी ज्यादातर शहरों में प्रोटेस्ट पीसफुल थे, एक्सेप्ट आई थिंक देयर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस फ्रॉम प्रयागराज एंड ऑल्सो फ्रॉम सहारनपुर. ठीक है, बट दीज प्रोटेस्ट बिकेम वेरी वायलेंट इन एरियाज अराउंड रांची. झारखंड के आसपास ये प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हुए. इनफैक्ट झारखंड में पुलिस फायरिंग में एक प्रोटेस्टर की मौत भी हो गई. करेक्ट. और आयरॉनिक एंड सैड पार्ट ये है दैट दीज प्रोटेस्ट हैव नो लॉन्गर रिमेन्ड एज द डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैटर ऑफ इंडिया, बिकॉज नाउ द रेमिफिकेशन ऑफ दीज प्रोटेस्ट or the outcomes or the impacts of these protests have also been felt outside India's borders. Many Islamic countries, including the countries which have very friendly relationship with India, like UAE, like Oman, like Qatar, like Maldives, they have expressed displeasure over the remarks. In fact, yesterday, Iranian foreign minister was in India. The foreign minister of Iran, his name is Amir Abdullah. Yesterday, Amir Abdullah, the Iranian foreign minister, was in India, and he also raised this issue in front of Dr. S. Jaishankar, the Indian foreign minister, right? And he also demanded strict action against the culprits, right? Similar type of demands are being raised in Bangladesh. बांग्लादेश में भी इसी टाइप की डिमांड्स उठ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो लोकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, the local Islamist groups in Bangladesh, they are mounting pressure on Sheikh Hasina, the Bangladeshi Prime Minister. वो शेख हसीना के ऊपर प्रेशर रेज कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश की गवर्नमेंट शुड टेक अ क्लियर स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी. बांग्लादेश ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया, बिकॉज बांग्लादेश has very friendly, very good relationship with India right now. So Islamists are mounting a pressure on Sheikh Hasina to take a side in this issue, right? And this is increasing the political troubles for Sheikh Hasina, because Bangladesh is going to witness elections next year. बांग्लादेश में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, और इसका मतलब ये है कि ये जो एक इशू है, some of these loose statements by some of the party spokesperson and some of the party leaders within India has now started affecting India's friendly relationship with some Islamic countries. Internationalize हो गया पूरा इशू, ठीक है. और इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि भारत सरकार ने दोनों लीडर्स के अगेंस्ट, भारत सरकार ने तो नहीं, बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी ने दोनों लीडर्स को सस्पेंड कर दिया है, एंड FIR हैज आल्सो बीन फाइल्ड अगेंस्ट वन ऑफ द लीडर्स. ठीक है. हालांकि अभी उस लीडर के खिलाफ बहुत सारा डेथ थ्रेट्स इशू हो रहे हैं, एंड शी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम. शी इज फेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ हर लाइफ एंड हर फैमिलीज लाइफ. सो काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं. आयुष ने एक क्वेश्चन पूछा जो आई थिंक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, बट आयुष का क्वेश्चन है, डज रोहिंग्या पीपल हैव राइट टू वोट इन बांग्लादेश? आंसर इज, रोहिंग्याज जो बांग्लादेशी हैं उनको वोट करने का राइट है, बट दोज हु आर इमिग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार, दे हैव नॉट बीन ग्रांटेड वोटिंग राइट इन बांग्लादेश. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर अबाउट रोहिंग्याज. रोहिंग्याज is a group which is present in that region since many centuries, and that group has moved. There are many waves of settlement of that group. So उस group ने बहुत सारे countries में move किया है. So there are Rohingyas present in Bangladesh, there are Rohingyas present in Myanmar, correct? Even before the troubles erupted in Myanmar in 2012 onwards, उससे पहले भी कुछ Rohingyas बांग्लादेश में रहते थे. So those who are Rohingyas but Bangladeshi native, Bangladeshi citizens, they have the right to vote. Not the ones who came to Bangladesh after 2012
फ्लीइंग फ्रॉम म्यांमार, उनके पास वोटिंग करने का राइट नहीं है। ठीक है, चलिए, सो मूविंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स इन इंडिया, लेट अस लुक एट सम ऑफ द इकोनॉमिक न्यूज। आज के दिन की इकोनॉमिक न्यूज को अगर हम देखें तो रुपीज, द डेप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी इज कॉन्टिन्यूड इन दिस वीक ऑल्सो। इस पूरे वीक में इंडियन रुपी लगातार फॉल हुआ है, एंड फॉल होते होते इंडियन रुपी हैज फॉलन बाय 21 पैसा in comparison to US dollar, right? And on Friday, that is yesterday, Indian rupee was valued at 77.84 rupees against $1 American. ठीक है, rupee is expected to remain weak for coming few days, mostly because of three reasons. रुपी जो है उसके वीक रहने की संभावनाएं हैं अभी अगले कुछ दिनों तक, उसके तीन प्राइमरी रीजंस हैं। ठीक है, these are those three reasons. One is the rising cost that India has to incur on its crude oil import. India के crude oil का bill बहुत बढ़ रहा है, which means a lot of our foreign exchange is getting used there, right? If we talk yesterday India's crude oil basket was priced at $121 per barrel. So India जो crude oil खरीदता है, that is coming at $121 per barrel. ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस सिंस 2012, यानी ये पिछले 10 सालों का सबसे हाई क्रूड ऑयल प्राइस है दैट वी आर पेइंग फॉर द इंपोर्ट्स राइट नाउ, एंड दिस इज वेल अबव द एस्टिमेट्स मेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने अपने एस्टिमेट्स और कैलकुलेशन किया था इस बेसिस पे कि क्रूड ऑयल का प्राइस 100 से $105 पर बैरल के आसपास रहेगा। सो आरबीआई मेड ऑल इट्स कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन दिस assumption, बट आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल is at a level much higher compared to RBI's estimate, और इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ रही है। दिस इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 की अगर हम बात करें ऑफ द फॉल इन रुपीज वैल्यू इज इन्फ्लेशन फिगर इन यूएस। यूएस में इन्फ्लेशन का फिगर अगर हम लास्ट वीक में देखें तो इन्फ्लेशन इन यूएस इज नियरिंग डबल डिजिट। ठीक है, 8.6% के आसपास यूएस में इन्फ्लेशन हो गया है, एंड अगले हफ्ते जो यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आने के चांसेस हैं, अगले हफ्ते यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होगा, सो चांसेस आर दैट इन्फ्लेशन विल रीच 10% इन यूएस। वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन हियर। सो चांसेस है कि यूएस में रिटेल इन्फ्लेशन 10% के आसपास पहुंच जाएगा इन नेक्स्ट वीक्स इन्फ्लेशन डेटा। ऑलराइट, और दिस विल मेक इट नेसेसरी फॉर यूएस फेडरल रिजर्व to increase the interest rates. I think you have studied in one of your lectures with a teacher, with one of your GK teachers, that what is the connection between interest rates and inflation? ठीक है, so inflation and interest rates are inversely related to each other. So if interest rates are hiked, if interest rates are increased, inflation is likely to come down. Right? So using this logic, US Federal Reserve is going to increase interest rates in the coming week. Right? And what happens is that whenever US Federal Reserve hikes the interest rate, foreign investors have the tendency to withdraw money from Indian stock markets and invest that money in America. ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, फेडरल रिजर्व जब रेट हाइक करता है तो Indian stock markets lose money and that money gets reinvested in America. And point ये है कि जब Indian stock market से foreign investors withdraw करेंगे, so they will demand a lot of dollars. They will demand their investment back in terms of dollars. और इससे क्या डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी. So this is also another reason for all the economists expecting rupee to stay weak for the coming few days. एक तीसरा रीजन ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो उसमें रिकवरी काफी वीक है. इनफैक्ट आपको शायद ये पता होगा दैट चाइना, शंघाई स्पेशली, शंघाई इज प्लानिंग टू इम्पोज अ लॉकडाउन वंस अगेन. ठीक है,
शंघाई फिर से वीकेंड्स पे एक लॉकडाउन लगाने वाला है। सैटरडे संडे शंघाई में लॉकडाउन होगा, और ये तब हो रहा है जब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद शंघाई हैज रीओपन्ड ओनली 10 days ago. But because COVID cases have started rising in Shanghai once again, so China is going to impose a weekend lockdown, weekend shutdown in Shanghai. So point here is that Chinese economy has not opened properly, and same is happening with the other countries in the world. War has also weakened the international supply chain as well as international demand. और इस वजह से क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो भी वीक है. दैट इज ऑल्सो बिकमिंग वन ऑफ द रीजंस. So these are the three primary causes because of which Indian rupee is likely to stay weak in comparison to American dollars in the coming weeks. Right? Okay. Moving away from economics, let us look at international relations. In international relation, let us look at something called as Shangri-La Dialogue. So Shangri-La Dialogue is a series of annual meetings and conferences which takes place in Singapore. So these are annual meetings in which 23 countries of Asia Pacific participate. And when I say that 23 Asia Pacific countries participate in Shangri-La Dialogue, so these 23 countries include India, it includes China, it includes Korea, it includes USA, Australia, New Zealand, and also the countries of ASEAN. So what happened in Shangri-La Dialogue yesterday is that there erupted another round of tension between US and China over the question of Taiwan. ताइवान के सवाल को लेकर यूएस और चाइना के बीच में एक फ्रेश राउंड ऑफ ट्रबल्स शांग्रीला डायलॉग में सामने आए, और इस बार इन डायलॉग्स का, इन टेंशन का कॉन्टेक्स्ट बना द मीटिंग बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ चाइना एंड यूएस. Ria, to answer your question, Shangri-La Dialogue is not very relevant for CLAT 2022, but CLAT 2023 students should pay attention to Shangri-La Dialogue. 22 के लिए इतना relevant नहीं है. So Shangri-La Dialogue, as I mentioned, is an annual meeting in which the defense ministers of these 23 countries and also the military chiefs, they participate, they meet every year in the month of June in Shangri-La Hotel in Singapore. Hence the name Shangri-La Dialogue. So इस साल जब ये मीटिंग चल रही है, so that meeting was the first face-to-face meeting between the defense ministers of US and the defense minister of China. Wei Feng, which is the Chinese defense minister, had the first face-to-face meeting with Lloyd Austin, the American defense minister. Okay? And during that meeting, Wei Feng issued some very, very strong statements. Okay? Wei Feng ने इस मीटिंग में clearly बोला है that if, and see the context of his anger was the US arms supply to Taiwan. US is supplying arms to Taiwan. This became one of the reasons which made China very angry. And second reason, probably was a slip of tongue. Second reason was a slip of tongue during Joe Biden's visit to Tokyo. So before participating in Quad Summit, when journalists asked Joe Biden about American policy in Taiwan, so in response to the question of a journalist, Joe Biden said that if tomorrow war breaks out in Taiwan, US is going to help Taiwan directly. Correct? And ये जो statement था Joe Biden का, this statement was in direct contradiction to the stated American policy, which is called as the American policy of strategic ambiguity. American policy of strategic ambiguity on the matters related to Taiwan. So if you look at the name of American strategy in Taiwan,
This name itself is telling you that there is ambiguity in America's response. Correct. But in while answering the question of a journalist, Joe Biden said it clearly that America will intervene from the side of Taiwan in case a war breaks out. So in दोनों चीजों ने, one, the weapons supply to our weapons sale to Taiwan, and the statement by American president related to America's Taiwan policy, इन दोनों की वजह से चाइना बहुत नाराज हुआ और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट इशू किया that if any other country interferes in Taiwan, or if Taiwan is thinking about independence, we will go to any length to stop Taiwan from doing that. We will not even hesitate in launching a war against Taiwan. Right? So कल उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर हमको जरूरत लगेगी तो हम ताइवान के ऊपर वॉर भी करेंगे. करेक्ट. और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वाज आल्सो प्रेजेंट इन दिस मीटिंग. जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा. ही आल्सो रेज्ड अ वार्निंग बेल. वो तो थोड़ा और भी ज्यादा पैनिक हो गए. उन्होंने तो स्टेटमेंट इशू किया दैट इट इज यूक्रेन टुडे, इट कैन बी ईस्ट एशिया टुमारो, which means he is referring to the real Chinese threat of starting a similar type of assault or a similar type of conflict in areas around Taiwan. ठीक है. तो शांग्रीला डायलॉग में एक इंटरेस्टिंग और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है. राइट. Okay. Let us look at one more news item from today's newspaper, which I found to be very important for your exam. That is the annual budget presented in Pakistan. Okay. Not that Pakistan's annual budget is very important for us in India, but in comparison, we will try to understand some of the things. We will compare Pakistan's budget with that of India's budget, at least the defense component of that. Okay. ताकि आपको समझ में आए where do we stand as the two neighbors, where do we stand. So पाकिस्तान ने कल अपना बजट प्रेजेंट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23. The new finance minister, because Pakistan has a new government, it is Miftah Ismail, the finance minister of Pakistan, presented the budget yesterday, and the overall quantum or the size of budget is 9500 billion rupee. Okay, this is the size of total budget of Pakistan. Now, please do not get intimidated because the rupee that we are talking about here is Pakistani rupee. This is not Indian rupee. ये पाकिस्तानी रुपी है. और अगर आपको पता हो तो पाकिस्तानी रुपी is valued almost 1/3 than that of Indian rupee. So 1 Indian rupee is approximately 3 पाकिस्तानी रुपी और 2.7 पाकिस्तानी रुपी. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो नंबर इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, this is only in terms of पाकिस्तानी करेंसी. ठीक है. And no wonder that two of the biggest component of Pakistan's budget. So ये जो पूरा इतना बड़ा बजट आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो दो सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से पहला फर्स्ट कंपोनेंट इज डेट रीपेमेंट. सो डेट रीपेमेंट और डेट सर्विसिंग कॉस्ट्स पाकिस्तान ऑलमोस्ट 29% ऑफ इट्स बजट. यानी कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 1/3 बजट जो है, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 1/3 बजट जो है वो EMIs पे करने में जाता है. ठीक है. What do you think is this percentage in case of India? मैंने कहा था कि हम दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे. हालांकि these two countries are not really comparable, but फिर भी अगर हम इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करें तो I am telling you that almost 29% of Pakistan's budget every year goes towards paying EMIs of last year's loans. What do you think is the percentage in case of India? Comment करके मुझे बताना. Number 2, after debt repayment, the second biggest component of Pakistan's budget expenditure every year is defense. So Pakistan spends almost 17% of its annual budget every year on defense.
यहां पर भी आपको कंपेयर करके बताना है कि इंडिया अपने बजट का टोटल कितना परसेंट डिफेंस के ऊपर खर्च करता है. सो आई थिंक उदित का आंसर करेक्ट है. सो फॉर द फर्स्ट, दैट इज debt repayment, this is roughly 16% in case of India, which is one fifth, one sixth, roughly one sixth. And when it comes to defense, India spends almost 15% of its annual budget on defense. In fact, you must have come across this SIPRI report. SIPRI report last month, which placed India as the country with third largest military spending in the world. यानी कि अगर मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें, अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करने लगे, सो दुनिया में जो कंट्री सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करता है वो है यूएस, फॉलोड बाय चाइना एंड फॉलोड बाय इंडिया. सो इंडिया अपने बजट का अप्रॉक्सीमेटली 15% जो है वो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंड करता है. पाकिस्तान 17 करता है. ठीक है, हालांकि ये परसेंटेजेस हैं, बिकॉज इन एब्सोल्यूट टर्म देयर विल बी वेरी वेरी स्टार्क डिफरेंस. इंडिया की जीडीपी बहुत बड़ी है, इंडिया का बजट बहुत बड़ा है, इसलिए उसका 15% भी इट विल बी ह्यूज. ठीक है, ऑलराइट. इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के बजट में एक और नंबर को कंपेयर करें, सो पाकिस्तान इज प्लानिंग फॉर एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नियरली 5%. सो पाकिस्तान टारगेट कर रहा है 5% जीडीपी ग्रोथ रेट, while we in India is targeting nearly 9% जीडीपी ग्रोथ रेट. हम बजट में 9% जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान 5% जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट कर रहा है. ठीक है, सो दैट्स अ रफ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो पाकिस्तान had its budget presentation yesterday by the finance minister मिफ्ता इस्माइल. इसके अलावा एक न्यूज़ और भी आ रही है रिलेटेड टू पाकिस्तान, एंड दैट न्यूज़ इज दैट प्रोबेबली परवेज मुशर्रफ, the former Pakistani military general and also the former president of Pakistan, is he has taken very ill. He is in Dubai right now, and there were rumors in the morning that he has probably died. हालांकि उनकी फैमिली ने ये क्लियर किया है कि he is hospitalized but he is still alive. Correct. So this is another news from Pakistan. Parvez Musharraf, you guys would be able to recall, was the same person in whose leadership or in whose time Kargil war took place. Correct. So that's from Pakistan. Okay, so this is it in today's lecture. These are some of the news from today's newspapers. Iske alawa, these are also 4 other news that I want you to pay attention to, especially the first one. Isko to Google kar lena. This is a new environmental performance index released by Yale University in association with Columbia. कोलंबिया और येल ने मिलकर एक नया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया है, और इस इंडेक्स में डेनमार्क इज रैंक नंबर 1, बट सैडली इन दिस इंडेक्स इंडिया इज एट द बॉटम. इंडिया इस इंडेक्स में 180th प्लेस पर है, राइट एट द बॉटम. तो इसको एक बार चेक कर लेना दैट व्हाट इज दिस इंडेक्स, व्हाट इज दिस न्यू इंडेक्स. News number 2 is about a committee of American Congress has blamed Donald Trump for Capitol Hill violence on 6th of January 2020. So American Parliament में जो violence हुआ था when Joe Biden was being elected as the president, the House panel has blamed Donald Trump for that, for instigating that. Russia has agreed to supply the new advanced nuclear fuel to our Kudankulam nuclear power plant in Tamil Nadu. And lastly, government has issued new guidelines to stop mis-selling, to guide brand ambassador to be more careful while endorsing products, and also to stop the fake reviews on e-commerce websites. उसके लिए सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आ गई है, तो उस पॉलिसी के बारे में भी चेक करना. क्लैट 2022 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 23 के स्टूडेंट्स इनको चेक करेंगे. ठीक है, सो विद दैट गाइज आई विल स्टॉप हियर and I'll see you again in one of our another lectures. Take care everyone. Bye bye. Good night.